हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सी पैक पे है। सी पैक का पाकिस्तान को क्या फ़ायदे हैं, इस सी पैक के जो प्रोजेक्ट है इसके जो डार्क साइड है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस पे अगर कोई नोट आया तो थोड़े बहुत जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। CPEC was first proposed by Xi Jinping in 2013 and launched in April 2015 along with the Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road। इसका जो मकसद था वो ये था कि जो एशियंट जो ट्रेड रूट्स हैं उनको दोबारा कनेक्ट किया जाए, एशिया को अफ्रीका के साथ और अफ्रीका को यूरोप के साथ। और सीपैक का जो प्रोजेक्ट है वो 3000 किलोमीटर एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ मैसिव प्रोजेक्ट ऑफ रोड्स है, रेलवेज़ है, पाइपलाइंस हैं एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस पाकिस्तान है। जो मेन मकसद है वो रिवाइवल ऑफ दी सिल्क रोड है, जिसे हम कह सकते हैं कि एशियन सिल्क रोड। और ये की रोल प्ले करेगा इन द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक टाइज एंड कल्चरल लिंकेजेस ऑल अक्रॉस द ग्लोब। और ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा डिस्टेंस बिटवीन चाइना एंड बिग मार्केट्स ऑफ इट गुड्स। चाइना चाहता है कि वो अपनी मार्केट्स को जल्द से जल्द मार्केट्स में पहुंचाए, मतलब जो बड़ी बड़ी मार्केटें हैं मिडिल ईस्ट की, अफ्रीका एंड यूरोप की। और पाकिस्तान को भी लाजमी इस जो बड़े प्रोजेक्ट से है इससे फ़ायदा होगा। ये मेगा जो प्रोजेक्ट है, जाइंट जो प्रोजेक्ट है। सी पैक विल लिंक कारगर एंड गवादर पोर्ट। इट वुड शॉर्टन द रूट फ्रॉम चाइना टू पर्शियन गल्फ। इसमें यह होगा कि जो चीज़ 45 डेज़ में मार्केट्स में पहुंचती थी वो लेगी 10 डेज़, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस तरह इजी हो जाएंगी। Avoiding any contested Strait of Malacca in Southeast Asia near Taiwan, Vietnam, Philippines, Indonesia and India। और फिर इससे ये होगा कि जो शिपिंग कॉस्ट थी वो लोअर हो जाएगी। इट विल लोअर द शिपिंग कॉस्ट, प्रोवाइड चाइना एन एक्सेस टू द अरेबियन सी फ्रॉम द नैरो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ टू द वेस्ट। सीपेक के जो हैं वो 4 पर्सपेक्टिव्स हैं: हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड जियोपॉलिटिकल। सी पैक और पाकिस्तान के जो फ़ायदे हैं, इससे जो एक्सपेक्टेड गेंस हैं वो भी आपको मैं बताती चलूँ। इट इज़ अ मेगा project with shared reserves for infrastructure development, power generation, industrial zones and mass transit schemes. No doubt, CPEC will affect an economic breakthrough in Pakistan if it worked out as planned. ये जनरेट करेगा 3 to 4 टाइम्स जो इन्वेस्टमेंट है उसके डबल ट्रिपल ये जनरेट करेगा रेवेन्यू। ये एलिवेट करेगा पॉवर्टी इन पाकिस्तान, क्रिएटिंग न्यू बिजनेसेस एंड जॉब्स, और इन्हांस करेगा स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस पाकिस्तान की। इस्टेब्लिशमेंट होगी की न्यूक्लियर एंड सोलर पावर प्लांट्स की। जो हमारा एनर्जी क्राइसिस है वो इससे सॉल्व होगा। एज अ अल्टरनेटिव जो हमारे पास एनर्जी सोर्सेज हैं, न्यूक्लियर एंड सोलर पावर प्लांट्स आ जाएंगे, और जो हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री है वो बूस्टअप होगी। ये जो पाकिस्तान की जीडीपी है, कहा जाता है कि ये उसको 15% रेस करेगा। चाइना's economic and military assistance will also help Pakistan in narrowing its ever-widening gap in economic, military and nuclear field with India। फिर इस पॉलिसी में जो सीपेक की पॉलिसी है उसमें लिखा है कि चाइना जो है एक जो है एक न्यू ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आएगा एग्रीकल्चर में, और उससे ये होगा कि एक शिफ्ट होगा, जो पुराने जो टेक्निक्स है वो जो है ख़त्म होंगी और मॉडर्न टेक्निक्स आएंगी। दैट्स वाई एक ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा, जिसकी वजह से इंक्रीज़ होगा नेट आउटपुट में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वगैरह हैं। Human resource development and educational linkages and improving healthcare are additional benefits of this project। अक्सर जगह पे मैंने पढ़ा है कि इसको डार्क कॉरिडोर भी कहा जाता है। इसकी डार्क कुछ साइड्स हैं। ये कहा जाता है कि चाइना ने बहुत ज़्यादा बिग इन्वेस्टमेंट की है इस प्रोजेक्ट में, और पाकिस्तान को वो जो है नेक्स्ट जो डिकेट है एंड हाफ उसमें जो है पाकिस्तान एशियन टाइगर बन जाएगा। कुछ फिर कमेंटेटर्स कहते हैं कि ये जो है क्या सिर्फ सेफ गार्ड करेगा और बेनिफिट करेगा चाइनीज़ इंटरेस्ट को, और या
کیا اس سے پاکستان کو بھی بینیفٹس ہوں گے؟ پہلے ہی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. ان پاکستان مینوفیکچرنگ از آن ڈکلائن, امپورٹس آر انکریزنگ اینڈ بیلنس آف پیمنٹ از lopsided. What the CPEC will do is actually shrouded in mystery. There is little public information, little disclosure of how it will be built, how it will be financed, and will it be a grant or a loan, and who will implement it in various parts of the plan, for example railways, roads, pipelines, or industrial zones. Other projects such as Metro Bus and Orange Line being part of the corridor are also creating much controversy and consternation. کہا جاتا ہے کہ نیکسٹ ہمارا ایک اکنامک کرائسس آنے والا ہے, ہمارے ڈور سٹیپ پہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ اتنے بڑے لون کو واپس نہیں کر سکتی 2020 تک, اور پاکستان میں گو انٹو ریسیشن. پھر کول کا کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ کول ہے. کول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چائنا اپنا کول لے کر آ رہا ہے پاکستان میں اور اس کو پاکستان میں ڈمپ کر رہا ہے, دو دا کنٹری از آلریڈی ریچ ان کول مائنس. کہا جاتا ہے کہ چائنیز جو ہیں اس سے الیکٹریسٹی بنائیں گے. دس کول ول پروڈیوس الیکٹریسٹی ایٹ مچ ہائر کاسٹ, اینڈ مور شاکنگ از دیٹ اٹ ول بی compulsory for Pakistan to buy that electricity, and it will again worsen the situation regarding the daunting circular debt. پھر مین پاور آ جاتی ہے. Chinese companies are bringing their own main power, hence the multiplier effect of infrastructure will benefit Chinese more than the locals. اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ پاورٹی ہوگی پاکستان میں, ایکسپلائٹیشن اینڈ ان امپلائمنٹ ان پاکستان بنے گی. اس کا جو اینڈ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پاورٹی انکریز ہوگی, ایکسپلائٹیشن اینڈ ان امپلائمنٹ ہوگی پاکستان میں. پھر ایکسپینسز آف جو سیکیورٹی ہے وہ انکریز ہوں گے. ایکسپینسز آن دی روڈ بیکاز آف سیکیورٹی ول آلسو بی بورن بائی پاکستان, مطلب پاکستان پہ یہ ایک ایڈیشنل برڈن ہوگا. اس کے ساتھ کچھ انوائرمنٹل کنسرنز بھی جڑے ہوئے ہیں کہ چائنیز جو ہیں وہ یوز کر رہی ہیں ایمیشنز بیلچنگ ٹیکنالوجیز, کلیئرنگ اینڈ ڈسٹرائنگ ایگریرین لینڈز جو یہ روٹ بنا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو کول کا یوز ہوگا یہ تو ٹیکنالوجی 19th سینچری کی ٹیکنالوجی ہے جب کول سے الیکٹریسٹی بنائی جاتی تھی. اس سے یہ ہوگا کہ کاربن کی جو ایمیشنز ہیں اور ہیوی جو کنزپشن آف واٹر ہے وہ ہوگا, اور کاربن ایمیشنز آپ کو پتہ ہے کہ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج میں کیا رول پلے کر رہی ہیں. جو نیکسٹ ہے چائنیز لینگویج اینڈ کلچر. Introduction of Chinese language as well as the Chinese culture in the curriculum as a compulsory subject will burden the already struggling students, and it will also create socio-religious issues as Chinese language and culture directly contradicts our religion, traditions and social fabric. Importance of CPEC to Chinese or materializing the Chinese dream. China considers CPEC a flagship project of a broader One Belt One Road policy. China اس سے کیا کرے گا, will get access to huge consumer markets in the Middle East, Africa and Europe. CPEC will link China to nearly half the world's population. اور جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ US ڈومیننس کو کاؤنٹر کرنا in the region. پاکستان میں اس کا مقصد جو ہے ایکسیس کرنا ہے ٹو ڈیپ سی پورٹ آف گوادر اینڈ یوز اٹ ایز اے نیچرل بیس ان کیس آف ٹینشنز ود انڈیا. China's dilemma of Malacca Strait will be easily overcome because the strait is not too deep for large vessels to pass through. CPEC also gives a useful alternative to utilization of Chinese labor to their own benefits. Chinese companies have bought 40% of the share of the Pakistan Stock Exchange, enabling themselves to reshape the Pakistan economy to the utmost benefit. China will also become an important stakeholder in Afghanistan and will try to diminish US existence in this part of the world. China could threaten India claims of the birth region by exploiting the Kashmir issue. It's a win-win situation for China in any case. اس کا ایک ریالٹی چیک ہے. Chinese companies always play smart and try to get excellent outcomes on their investment without country geopolitical and geostrategic returns. Second here, they are keen to invest in a volatile economy like Pakistan. There are major chances to extract anything from them.
थर्ड, इसका जो रियलिटी चेक है, इट इज़ अ जनरल misconception on that money is coming from China, because in reality Pakistan has been spending a lot from its own sources. Number fourth है, other than security expenditures, infrastructure costs are also borne by Pakistan. Number fifth है, after a couple of years when Pakistan will have to return the loan, there will be outflow of money and profit remittances to Chinese companies. This might endanger Pakistan's already depleting forest reserves. Sixth है कि Pakistan has done no planning how revenue will be generated for these payments, and that may compel the country to return to IMF. कंक्लूजन जो इसका निकाला है मैंने, वो ये है कि इट इज़ द नीड ऑफ आर फॉर पाकिस्तान टू प्ले अ स्मार्ट गेम एंड नॉट टू पुल ऑल ऑफ इट्स एग्स in one basket. We have to benefit from this project. Political consensus and improved law and order are prerequisites. Third है, decision must be made on the basis of economic gains and multiplier impacts on the economy. Pakistan's strategic importance should not be hindered in the long or short run. Transparency must be ensured for smooth functioning and equal distribution of benefits. In a nutshell, there are a lot of unanswered concerns. We cannot let us imperialism be replaced into a Chinese variety, or let the Chinese to take the role of new East India Company, because it will paralyze our nation forever or make a Pakistan dummy state in the hands of China that is always able to pull out money and knock Pakistan into depression. We do not need development at the expense of sovereignty, as no Chinese naval base in Gwadar will be acceptable in the long run. Most importantly, we will have devised an indigenous economic policy so as to guarantee Pakistan's stability and economic growth. उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी. Thank you.